Hello and good evening. My name is Brijesh Dalmia and I am speaking at the platform of Masterstroke, Saturday, 8th of July, 6 p.m. And today's topic is how to sell big ticket SIPs, the easy way to sell big ticket SIPs. And I will give you 3 or 4 ideas using Masterstroke tools also, as well as some of the things that I have personally done in my life over the last 20 years to increase my SIP book. And what I will tell you is that कि छोटे एफर्ट से बड़ी एसआईपी कैसे बेच सकते हैं। सबसे पहली थॉट जो मैं आपको देना चाहता हूं आज वो ये है, बड़ी बात करना सीखो। स्टार्ट टॉकिंग बिग। मेनी टाइम्स यू सेल स्मॉल एसआईपी बिकॉज you do not think that the other person can give you big SIPs. You propose 2,000, 5,000, 10,000. Start proposing big ticket SIPs. This is the first thing to sell big. बात करने से बात बढ़ती है। मैंने अपने लाइफ में एग्जांपल देखा है that when the client asked me how much SIP should I do, Brijesh, when my SIP was 5,000, I used to tell 10,000 rupees. I thought 10,000 is a big amount. And client used to give me 10,000 SIP. And then I used to think, next time I will tell to 20,000. After 5 years, my SIP was 20,000 and my client asked me again, how much SIP should I give you when I proposed SIP? And he said, he asked me, how much should we do? I thought my SIP is 20,000. I'm doing okay. How much SIP he can do? I always underestimated my clients. And I thought, last time I made a mistake. This time I will quote him a big figure. I quoted him 50,000. You should do 50,000 SIP. And he said, Mr. Dalmia, you will invest in 2 fund or 4 fund. Means he was ready. No questions asked. And this happened till the time I started quoting 2 lakh and 5 lakh and 10 lakh rupees SIP, and clients started giving me 2 lakh, 5 lakh and 10 lakh rupees SIPs also over a period of time. And now whenever a client asks me, how much SIP should I do? I try to realize and understand a new client, let us say, and I start with 1 lakh rupees and 2 lakh rupees. I don't quote 5,000, 10,000. If he has to give 10,000, he will anyway give 10,000. Let us take the chance of 50,000, 1 lakh, 2 lakh and 5 lakh rupees. Start saying that I think you can even consider 1 lakh, 2 lakh rupees. And if you kind of, if surplus is there, you can even do 5 lakh rupees SIP. बात करने से बात बनती है। अगर 100 आदमी से अगर आप 2 लाख SIP मांगेंगे ना, 2 आदमी ने भी दे दिया तो भी जीत जाएंगे आप। और 5-5 हजार से 4 लाख की SIP बेचना 80 क्लाइंट को इतना आसान नहीं होता। सो पहला थॉट आज का मेरा ये है, इजी वे टू सेल बिग टिकट SIP इज टू स्टार्ट आस्किंग बिग टिकट SIPs फ्रॉम द क्लाइंट, एंड इफ दे आर नॉट विलिंग टू गिव बिग टिकट एनी विच वे, दे विल गिव व्हाटएवर दे वांट। बट अगर आप 1 लाख मांगेंगे तो वो 10,000 की जगह 20,000 देंगे, क्योंकि उनको लगता है यार बहुत छोटा हो जाएगा, ये मेरे से ज्यादा उम्मीद कर रहा है। टेक चांस। दिस इज द फर्स्ट thought, and I will share my screen here and I will give you an example here. You can see this screen here. So SIP planning, 10,000 की SIP 20 साल में 12% से 24 लाख की इन्वेस्टमेंट की 91 लाख रुपीस हो जाती है। ओके, जब भी आप क्लाइंट को SIP का प्रपोजल भेजिए ना, सिंगल प्रपोजल कभी मत भेजिएगा। दिस इज माय सेकंड आइडिया। Always send 2 proposal. One SIP amount 10,000 to दूसरी 30,000 rupees. One 30,000 to दूसरी 80,000 rupees. Always send 2 SIP proposal to the client. It is always proportionate, of course. For example, अगर 10,000 की SIP में 92 lakhs बनेंगे तो 30,000 की SIP में 3 times 2 lakh 2.75 crores मिलेंगे. But client doesn't understand this. He thinks, oh my God, if I increase my SIP from 10,000 to 30,000, I will get 2.75 crores. Big amount, and he will give you 30,000. He will give you 20,000. Any which way, if he cannot afford, he cannot give, he will start with 10,000. You have nothing to lose. Do you agree with this? Please write yes in the chat box that have you tried this? Do you think it will work with you or not? This is my first idea to you. Start doing this. My second idea is to sell limited period SIP, and this is out of this box. I started selling limited period SIP after I launched Masterstroke, using Masterstroke tools myself. And this is brilliant, limited period SIP. Let me give you an example again. Now let's see what limited period SIP does. Propose limited period SIP. Tell the client that if you do regular SIP of 10,000, 12% return for 30 years, your corpus grows to 3.08 crores. Give this proposal to the client.
So your investment amount is 36 lakhs. Also give two more proposals. One 30,000 rupees SIP and one limited period SIP. I told you 10,000 की दे रहे हो तो 30 की भी दो, और 30,000 की SIP में यहाँ दिखाओ 10 करोड़ हो जाएंगे। और उसके साथ एक और SIP का प्रपोजल दो कि मिस्टर डालमिया, डू यू माइंड दैट you don't have to do 30-year SIP, you can do only 10-year SIP. Increase the amount by 40%, 14,000 की SIP. And your investment amount is also less, from 36 lakhs only 17 lakhs, but your end value is the same. Try this. How many of you have tried this? Please write again yes if you think this is a very powerful concept. I have been speaking about this before also. That same amount. Most of the clients are not comfortable paying 30 years 10,000 rupees. If you propose, they don't even know about the concept of limited period SIP. बात करके तो देखो, उनको बोलो कि 10,000 की जगह पहले 10,000 की SIP को क्लोज करो, और उसके बाद फिर से इमीडिएटली प्रपोज करो, या दोनों सामने में दे सकते हो। इंक्रीज SIP बाय 40%. इजी वे टू सेल बिग टिकट SIP. आपको करना क्या है? इफ द क्लाइंट इज ओके विद 10,000 रुपीज SIP, ही विल गिव यू 10,000. देयर इज अ चांस दैट यू कैन गेट 14,000, इजंट इट? टेक चांस. मैं हमेशा बोलता हूं, चांस लो. चांस लेने से काम बनता है. हाथ ऊपर उठाओगे तो मौका मिलेगा बोलने का, फिर नोटिस में आओगे और फिर बिजनेस भी मिलता है. सेकेंड एग्जाम्पल, रेगुलर SIP 10,000 रुपीज की 12% से 30 साल में 92 lakhs बनती है. ओके, थोड़ा डेटा में कहीं कुछ एरर है. एनी विच वे, if you do limited period SIP of 20,000 rupees, sorry, this will be 20 years. I made a mistake here. Just give me one moment. Let me correct this. Okay, so it is 20 years. Where is the sharing button? Yeah, okay. Okay. So 10,000 rupees SIP for 20 years, 24 lakhs becomes 92 lakhs. Tell the client you have two choices, sir. First, you can do 10,000 SIP for 20 years. The other choice is double the SIP amount for 5 years. I guarantee you more than 50% of your clients, 70% of the client will go for this option. Okay. Increase your SIP by 100%. Increase your SIP by 100%. Do you agree? Can I have 200 people saying yes in the chat box? Do you agree with this thought process of 10,000 to 20,000 rupees? You do SIP for only 5 years. Now, insurance में क्या होता है यूलिप के अंदर में? I want to have yes in the chat box continuously. All of you should write if you agree with this. लिमिटेड पीरियड पेमेंट में यूलिप पॉलिसीज क्यों ज्यादा बिकती है? क्लाइंट को पहले बोला जाता था 3 साल प्रीमियम देना है, एंड पीपल यूज्ड टू गिव 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख प्रीमियम. नाउ दैट रूल हैज चेंज्ड टू 5 years. So people take insurance for 30 years and they only pay for 5 years, and the investment amount was पहले 50,000 की SIP इंश्योरेंस बिकती थी, अभी 5 लाख 10 लाख की बिकती है, बिकॉज क्लाइंट बोलता है 5 साल तो मैं 10 लाख दे सकता हूँ, 5 लाख दे सकता हूँ, और इंश्योरेंस एडवाइजर का बिजनेस 5 times हो जाता है. The same concept you should start into mutual fund and SIP, that आप 10,000 की SIP 10 साल के लिए 30 साल के लिए प्रपोज करो, and the next option you propose कि 20,000 30,000 की SIP only for 4 years and 5 years. And after 5 years, if you're thinking that the client will stop the SIP, I can tell you he will double the SIP after 5 years, because he will understand the concept of SIP in 5 years time, that it has gone through the cycle of ups and downs and returns. He will forget, he will go Gajni, short-term memory loss, that he started SIP for 5 years, and you don't have to remind him that you started only for 5 years and stop. You should tell him your SIP has stopped. और वो भी भूल जाएंगे कि 5 साल के लिए SIP की थी, और वो 5 साल के बाद बोलेंगे डालमिया जी मेरी SIP बंद कैसे हो गई? मैं बोलूंगा गलती हो गई, 60,000 के SIP दोबारा चालू करते हैं. इट वर्क्स माय डियर फ्रेंड्स. आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है. मैं कहता हूं कम मेहनत करके डबल अगर आपको SIP बनाना है तो लिमिटेड पीरियड SIP बेचिए. एंड फाइनली आई विल शेयर 3 more presentation with you very quickly, how you can make use of master stroke ready-made presentations. Here it is. मैं 3 प्रपोजल देना चाहता हूँ. एक हमारे मास्टर स्ट्रोक रेडीमेड प्रपोजल है, और 2 एक SWP प्रेजेंटेशन है, और एक हमारे चाइल्ड एजुकेशन प्रपोजल है. ये तीनों प्रेजेंटेशन आप निकाल सकते हैं प्रीमियम मेंबर हमारे मास्टर स्ट्रोक से. जबरदस्त प्रेजेंटेशन है. लेट मी शो यू वन प्रेजेंटेशन, रेडीमेड प्रपोजल SIP प्रेजेंटेशन लिमिटेड पीरियड. ये प्रपोजल मैंने मास्टर स्ट्रोक से निकाला है. ये प्रपोजल क्या कहता है? SIP इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फॉर चाइल्ड एजुकेशन. मैं यहाँ पे छोटी शॉर्ट में करूंगा.
कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है इन ग्रेजुएशन एट 18 ईयर्स, इफ यू डू मंथली SIP फॉर टिल एज 18, you have to do 16,000 rupees for 18 years, 17 years. But if you do only for 5 years, you can double your SIP book by 32,000. Give this option to the client. Let him take any option, one time single premium, 5-year payment, 10-year payment. If you give these 4 options, I can guarantee you more than 60-70 people will take this option. That okay, my child premium, बच्चों की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए मेरे को 5 साल खाली पैसा देना, 30,000 तो मैं किसी तरह से दे दूंगा। और अगर 2 करोड़ रुपया चाहिए आपको एज 21 में, तो 21,000 की जगह 45,000. यूज दिस प्रेजेंटेशन, दिस इज वेरी पावरफुल. सिमिलरली, इफ यू नीड 75 लाख रुपीज ग्रेजुएशन पे एट 18 ईयर्स, फॉर रेगुलर SIP 20,000, for limited SIP 37,000. Insist the client, give him the option. He is not aware of the option. It will work brilliantly if you do this. Second proposal. This proposal has also been printed by Masterstroke Calculator, child education limited period SIP proposal. This is from the ready-made proposal, और ये जो मैंने आपको दिखाया ये भी ready-made proposal है. Limited period SIP investment proposal in brief, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया. Scenario 1. Let us say you want to create a corpus after 15 years. You start SIP of 10,000 for 5 years only in limited period SIP. And then hold the investment for another 10 years. This will help you build a corpus 25 lakhs. So what happens is that tell the client you have to invest only for 5 years. Okay. 10,000 for 5 years and then further holding period 10 years and you get 25 lakh rupees expected value. कुछ नया देना आपको क्लाइंट को, उनको बताना एक नया प्रपोजल मैं आपको देना चाहता हूं. चीज वही है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल. Second, again 30,000 rupees for 10 years time period and then hold for 20 years. Forget about whether he's holding or not. At least from 10,000 rupees, you are increasing the SIP book by 30,000 rupees 3 times. His client is also happy. You are also happy because you are helping India make more saving. You are helping the client make more saving. Your SIP book is tripling. And then you can expected future value 6.5 crores over 30 years if you do 30,000 rupees for 5 years, 10 years. Even I am amazed when I see these figures, friends. मुझे लगता है फिर से गलत है क्या ये डेटा? 30,000 की SIP 10 साल तक करेंगे, 36 लाख रुपए लगाएंगे और 20 साल होल्ड कर लेंगे तो 6.5 करोड़ रुपए बन जाएंगे. अनबिलीवेबल है. Scenario number 3, for 20,000 for 10 years and you hold for 6 years and you get 88 lakhs. Use such kind of presentation. And finally, friends, this is the calculator for retirement planning and SWP. I have used SWP comprehensive calculator of Masterstroke. What I've done is that I will propose the client 25,000 rupees SIP. Let's say the client age is 40 years. I will tell him that you should do SIP for 25,000 rupees only for 10 years. 30 years client, 10 year SIP, यानी 30 to 40 year age में आपको 25,000 रुपए की SIP बेचनी है, लेनी है, and then you hold for 20 years. The corpus will become 5 crore 40 lakh rupees. If you're telling a 30-year-old person that save 25,000 rupees for 10 years in your life and you can get 5 crores rupees, 75% of your clients will start 30-40,000 rupees of SIP. Everybody is earning today 75, 1 lakh, 1,000, 1 lakh rupees. इतने बड़े बड़े फिगर आप दिखा सकते हो उनको कि ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, विद प्रॉपर डिस्क्लेमर ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव. और आप उनको ये बताते हो कि मैं आपको 2 लाख रुपए महीने से आपकी रिटायरमेंट इनकम चालू करूंगा. एक बंदा जिसकी इनकम 1 लाख रुपए है आज, उसको बोलते हो कि आप सिर्फ 25,000 रुपए मुझे दो 5 साल 10 साल के लिए और 60वें साल से मैं आपको 2 लाख रुपए का SWP दे सकता हूं विद 5% इंक्रीमेंट एवरी ईयर फॉर 30 ईयर, यानी एज 90 ईयर्स तक के लिए. टोटल में 16 करोड़ का विड्रॉवल होगा और बाद में 2 करोड़ पर बच भी जाएंगे. ये कैलकुलेशन है. 25,000 रुपए 10 साल के लिए आपने दिया महीने का, तो 56 lakhs होते हैं. देन यू होल्ड फॉर 20 ईयर्स, इट बिकम्स 5 crore 40 lakh rupees, and then you start withdrawal from 2 lakh rupees per month, and then it becomes 3 lakh rupees after 10 years, and it becomes 5 lakh rupees after 20 years, and finally at 90 years he is getting 1 crore per year, that is 8 lakh rupees per month, and his balance is this. Sell limited period SIP. Sell limited period SIP. This is all I have, my dear friends. I will wait for your comments in the chat box, and I tell you, बात करना सीखो, बड़े SIPs बेचना सीखो. क्या होगा ज्यादा से ज्यादा 1-2 क्लाइंट बोलेंगे कि 5,000 की SIP करनी थी, आप तो 2 लाख की बात करने लगे. 2 क्लाइंट नहीं देंगे SIP, लेकिन हो सकता है कि 10 में से 2 क्लाइंट 2 लाख की दे दें. आप जीतोगे, मैं कहना चाहता हूं. चांस लो.
हिम्मत बढ़ाओ। आपकी 25,000 की एसआईपी चलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया में सब लोग 25,000 की एसआईपी करेंगे। 25 लाख की भी एसआईपी लोग करने की ताकत रखते हैं। मैं आपको एंड करना चाहता हूं इस प्रेजेंटेशन को एक फेबल के रूप में, जो मैंने पढ़ा था। सच है कि झूठ मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ये। And please keep writing in the chat box how do you like this presentation. Once there was a life insurance advisor who used to contact a wealthy person in his town and propose him 1 lakh rupees annual premium insurance. And he used to go to the client every 2 months and propose 1 lakh rupees of insurance. And he said that after 20 years, you will get 25 lakh rupees or 40 lakh rupees in 20 years time. And the wealthy person used to think about it and he said, okay, I will let you know. After 1 year, there was a headline in the newspaper that one of the most biggest policy of India was sold today in the city, and the person's name flashes. He was the same client. He was proposing 1 lakh rupees, and the policy he took was for 5 crores. The advisor runs to the client and asks, वो जाओ दौड़ के जाता है और पूछता है, सर मैं आपके साथ 2 साल से 1 लाख रुपए की प्रीमियम की पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रहा था, आपने नहीं दिया, और यहाँ 5 लाख की पॉलिसी किसी और से कर लिया आपने। क्लाइंट ने बोला, अरे बेवकूफ, मेरी हैसियत देखी है आपने? आप मुझे बोलते थे कि 20-25 लाख रुपए, 40 लाख रुपए 20 साल बाद मिलेगा, क्या काम आएगा मेरे? मेरे तो महीने के 20 लाख के खर्चे हैं। एक दूसरा एडवाइजर आया, उसने मेरे को बोला कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए महीने का पेमेंट दूंगा 20 साल के बाद में, इतना प्रीमियम लगेगा। तो मेरे को एक्साइटमेंट हुई, मैंने कर ली पॉलिसी। डिड यू लाइक दिस एग्जाम्पल और नॉट? बड़े लोग बड़े तरीके से सोचते हैं, उनको बड़ी चीज प्रपोज करो, काम बनता है उससे आपका। थैंक यू सो मच।